Please put your attendance. Good morning, everyone. Today we are going to start with a new topic of compound interest in which the successive rates for different years will be totally varying from each other. So let us see, for example, this is class 8 and today is 1st of Feb, chapter number 10. Okay. Today's key points that we are going to learn is different rate of interest. The second thing that we are going to learn is to find principal. Okay, this will cover example number 12 and example number 13 is your homework. This will also cover try this, which will be solving. To find the principal will cover example number 14 and 15. I think 15 will be your homework. So today's layout is like this. So let us begin. So when the rate of interest is different, for example, you have to find the amount. आप कैसे फाइंड करते थे कि प्रिंसिपल दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है और टाइम दिया होता है. तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करते हैं? पहले आप अमाउंट फाइंड करते हैं, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है. तो अमाउंट की फॉर्मूला होती थी पी इंटू ब्रैकेट 1+r/100. ये हो गया नॉर्मल एनुअली जो आप फाइंड करते थे. अब आपके पास एक सिनेरियो है कि आपके पास प्रिंसिपल जो है वो है 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए बैंक में रखने हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो देखते हैं. पीरियड इज 3 इयर्स, 3 साल 1,00,000 को रखना है. लेकिन उसने क्या बोला बैंक मैनेजर ने कि फर्स्ट ईयर होगा तब 5% दूंगा, सेकंड ईयर होगा तो मैं 8% इंटरेस्ट दूंगा, थर्ड ईयर होगा तब मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा. सो नाउ द रेट आर फॉर ऑल द 3 इयर्स. इसको बोलते हैं डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स. एक के बाद दूसरे साल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है. यहाँ तो आपको नॉर्मल था ही. in exercise 10A question number 1, 2 and 3. Now yearly तो है, every year we have to, but the thing is that the rate of interest will change every year. आपको उसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है. अमाउंट उसमें ढूंढने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 plus this we call R1, this we call R2 and this we call R3. Here we solve R1 upon 100 multiplied by 1 plus R2 upon 100 multiplied by 1 plus R3 upon 100. बहुत कुछ करना नहीं है इसमें. आप यहाँ पे n लेते थे, यहाँ पे n वेन कुछ नहीं लेना है. n मतलब नंबर ऑफ इयर्स. यहाँ पे हर एक साल का अलग अलग इंडिविजुअली यू हैव टू कैलकुलेट. सी दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाला. यहाँ पे R1 मतलब 5, यहाँ पे R2 मतलब 8. दिस विल बी 5, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 10. पावर में कुछ नहीं है. So the next step will be amount is equal to 1 lakh into bracket 1 plus 5 upon 100, 1 plus 8 upon 100, 1 plus 10 upon 100. Clear? Now you have to find the amount. अब आप लोगों को पता है हाउ टू फाइंड द अमाउंट, कैसे इसको सॉल्व करना है. आफ्टर यू फाइंड द अमाउंट and then subtract the principal from it, you get the compound interest. Am I clear with everything? Let us now solve example number 12. Page number 141, example number 12. I hope I'm clear with all my things.
Okay. Let us begin. Example number 12 on page number 141. Example 12. Find the amount and the compound interest occurred on 8,000 in 3 years. So very simple. Principal is equal to 8,000 rupees. Okay. We have to find the amount and compound interest. Amount भी ढूंढना है, compound interest भी ढूंढना है. Compound interest is equal to A minus P. Okay. याद रखना इसको. Rate of interest क्या रहेगा? 5%, 8%, and 10%. So this will be your R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, कभी कभी कहीं तक जा सकता है. And the time will be obviously 3 years. ठीक है? Let us find the amount. Amount is equal to P into bracket 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. Amount will be 8,000, 1 plus 5 upon 100, 1 plus 8 upon 100, 1 plus 10 upon 100. So amount is equal to 8,000. 100 यहाँ पे चला जाएगा, याद रखना, मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ. 100 यहाँ पे चला जाएगा, 100 plus 5 that is 105 upon 100. 100 यहाँ पे चला जाएगा, तो 100 plus 8 will be 108 upon 100. 100 यहाँ पे चला जाएगा, so it will be 110 upon 100. 100 यहाँ जाएगा, तो 100 plus 10 will be 110. Now let us do the reduced form. 0, 0 cut. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay. Let us do the division part. 4 2s are 4, 25. Okay. 5 5s are 5, 21. You multiply 2 into 21 into 108 into 11. Whatever you get, you divide it by 5 and you get the amount. आपको amount मिल जाएगा. After you get the amount, put it into the box and then put the amount over here and find the compound interest. You will also get the compound interest. I want everyone to put the answers in the chat box of amount and compound interest right now. Then only we will proceed. Quick. I want everyone to answer. Put your answers in the chat box. Put your answers in the chat box. What will be the amount and then what will be the compound interest? Very good. Compound interest is 1979.2. So we write down over here 1979.2 and the amount that is found will be 9979.2. Okay, so let us come down to try this three. Example number 13 is same as this. That will be your homework. Let us come down to try this three. Put a thumbs up if you are able to understand successive years. If you have doubts, then put that you have doubt.
Okay, fine. Let us begin. Try these three. If those who have doubts and are not able to ask, I request you to see the question number one. Try this three, then you will be able to understand. Page number 141, try this three. First question, find the amount and the compound interest. Question number, try this three. Question number one. Okay, so the question is given, find the amount. जो भी find करना रहता है, right side लिख दो इसको. Find the amount find करना है, and the compound interest. जो find करना होता है उसको right side लिख दो हमेशा. And the data that you're going to collect should be on the left side. Received by a person on 12,000. So principal is equal to 12,000 rupees. Rate of interest is equal to, यहाँ पे R1 से start करो. R1 is equal to 4%. R2 is equal to 6% and R3 is equal to 8%. Right. Now the time, you know that time, तो इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं, तो भी लिख लेते हैं time is equal to 3 years. We have the formula, the basic formula for successive years, interest different rate. Let us see, amount is equal to P into bracket 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. चार होते तो 1 plus R4 upon 100. Let us put all the values into the formula. So we have amount is equal to P, that is 12,000, 1 plus 4 upon 100, 1 plus 6 upon 100, 1 plus 8 upon 100. Fine. So now let us begin. This will be 12,000 into bracket 104 upon 100, 106 upon 100, and 108 upon 100. Let us do the reduced form. The reduced form will be in the form of, the zeros will go 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 multiplied by 104 multiplied by 106 multiplied by 108 upon 1000. Find the amount. क्या amount आ रहा है? Please tell me. Whatever amount you get, you have to then find the compound interest also. Put your answers in the chat box. What answer you getting? Okay, fine. Great. Many of them have put the answers. Let us come down to the second question. Second question is a 4 mark, 3 mark, 4 mark question in which you have to pay a lot of attention.
Second question has got two parts. Second question has got two parts. Just pay attention. Question says that compare. पहले तो आप है ना क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो. It says that you have to compare. Now what you have to compare? Compare the compound interest. जो नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते थे वो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो गया डिफरेंट रेट्स. यहाँ पे रेट सेम रहा, यहाँ पे रेट चेंज हो गया, तो वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिफरेंस ओवर हियर. I want everyone to write it like this only. Then only you'll be able to clearly understand. Question says that compare the compound interest on 20,000. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है that is rupees 20,000. यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो भी रहेगा रुपीज 20,000. कंपेयर करना है तो कंपैरिजन के वक्त बहुत सब कुछ चेंज सेम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही डिफरेंट रहता है. इन 2 years तो टाइम पीरियड विल बी 2 years, तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड विल बी 2 years एट 4% कंपाउंडेड एनुअली. तो यहाँ पे जो रेट रहेगा वो 4% रहेगा और यहाँ पे जो रेट रहेगा वो रहेगा R1 इज इक्वल टू 3 एंड R2 इज इक्वल टू 4%. ठीक है, ये हो गया एनुअली. एनुअली तो ये भी हुआ लेकिन इसमें तो डिफरेंट ही फॉर्मूला है, डिफरेंट रेट. ये हाफ ईयरली भी हो सकता था. Agar if there is a twist in the question can be half yearly. Now we have to compare which one is larger, which one is lesser. So we have to calculate both. Okay. And the question says that compare the compound interest. तो आपको फाइंड क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ पे भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. क्लियर? लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P into bracket 1 plus R upon 100. और यहाँ पे जो फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू P into bracket 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100. बस क्योंकि 1 और 2 ही है. ठीक है, so you take only this much. So amount is equal to 20,000 1 plus R, that is 4 upon 100. और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 into bracket 1 plus 3 upon 100 and 1 plus 4 upon 100. यहाँ पे फर्क क्या आएगा? यहाँ पे आएगा n नंबर ऑफ इयर्स. ठीक है, so amount is equal to 20,000 104 into 104 upon 100 into 100. अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा? 20,000 103 into 104 upon 100 into 100. कटिंग करो, अमाउंट फाइंड करो. यहाँ पे कटिंग करके अमाउंट फाइंड करो. Then you find the compound interest and then you get the answer which one has the larger amount of compound interest. I just give you 2 minutes quick. Please put your answers in the check box.
Okay. So let us start with the next type of topic. The next type of topic is inverse problems on compound interest. We'll be using the formula, this one. Okay. So focus on this formula only. This is the basic and the important formula. Pay attention. If the question says that the amount is given, okay, listen to me, amount is given. We'll use this formula only, okay, to find principal. We have to find the principal amount. Principal amount dash is equal to how much? Okay. Let us see how we are going to use what sum will amount to. इसको sum भी बोलते हैं. इसको sum भी बोलते हैं. जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया जाता है उसको sum भी बोलते हैं. What sum will amount to rupees 2420? तो आपको दिया क्या है? Amount is equal to 2420 rupees. If the rate of interest is 10%, rate is equal to 10% per annum, मतलब annually. And the interest rate is compounded annually. Also by the interest earned in for the third year. अच्छा, ये टाइम पीरियड यहाँ पे हो गया 2 years. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे. प्रिंसिपल क्या है? एंड उसमें क्वेश्चन भी दिया है, आल्सो फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ये भी फाइंड करना है. प्रिंसिपल तो फाइंड करना ही है. So how we are going to do? It's very easy to understand. Just pay your proper attention. You have the formula. उसमें यहाँ से कुछ रखना है. 2420 अमाउंट की जगह पे प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है. 1 plus r. R is equal to 10 upon 100 or whole power 2 years. This is the formula which we have to use. Okay. So 2420 is equal to principal into bracket 100 यहाँ चला जाएगा. 100 plus 10 is equal to 110 upon 100 into 110 upon 100. इतना ले सकता हूँ मैं. स्क्वायर है. 0 0 कट, 0 0 कट. ढूंढना प्रिंसिपल है. सो 2420 is equal to principal. यहाँ पे 11 into 11 121 हो जाएगा. 10 into 10 100 हो जाएगा. अब करेंगे ट्रांसपोज मेथड, तो 100 यहाँ चला जाएगा. 2420 into 100 upon 121 is equal to principal. Now बहुत सिंपल सा है. 121 का डबल करो तो 242 होता है. देखो 121 का डबल 242. 121 का डबल 242. तो 121 1 जार 121 20 जार हो जाएगा. 20 into 100 is equal to 2000. प्रिंसिपल आपको मिल गया 2000. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. हाउ यू विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर? 2 years का तो आपके पास अमाउंट है ही. ठीक है, तो वो बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. लेट अस स्टार्ट. सो अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर विल बी, नहीं इसमें तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट ही होगा. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर विल बी principal of for the third year multiply by rate multiply by time 100. This will be 2420 into rate, that is 10 into 1, क्योंकि सिंगल ईयर कमाई करना है, upon 100. Cut. Compound interest for the third year will be 242 rupees. This will be your answer. This will be your answer. Answer तो बहुत clearly लिखना पड़ेगा. Then only you will be able to score the marks. This was your finding the principal, example number 14 on page number 141.
I want everyone to write it down.